Hello friends, welcome to English Single channel. In this video we are going to discuss your first unit of core paper 9, that is classical antiquity. So what do you mean by the word antiquity? Listen, antiquity means ancient times, right? So in this classical, what is classical antiquity? So this is the time period in history when our ancient civilization like Greek civilization and Roman civilization flourished in which field the development we can see in the field of politics, art, science, literature, architecture, etc. So this period is known as classical antiquity. That means it was the great age, you can say, or the classical means something great, something unique, something important we should discuss. So let's understand what is classical antiquity. Classical antiquity is a long and influential period. One second, please. It's a long and influential period in the history of human civilization that focused on cultural, political, philosophical, and literary achievements of two major civilizations. It was most ancient civilization of human history, that is ancient Greece and ancient Rome. So this era roughly spans from 8th century before Common Era to 6th century Common Era. Remember, so the time period was from 8th BCE to 6th Common Era. It has laid the intellectual and artistic foundation of the Western world and continues to influence modern thought, literature, architecture, and governance. Then we will divide this time period into some sub periods. So it's not a uniform era, it is divided into several key periods based on cultural and political developments. First will come Archaic Period. So Archaic Period, it was spanned from 800 BCE to 500 BCE. This is BCE means before Christ or before Common Era. This is the early phase of Greek civilization. It was marked by the formation of city style. सिटी तैयारी होता सिटी गुड़ा को खोजुला पल्ली एबे भी आमर देखि बहुत सारा जगार ना पल्ली थाए आम इंडिया रे जेमति कि कष्टमपल्ली आम्रपल्ली हम कि नहीं नयापल्ली. So the development of alphabets and the beginning of Greek poetry and mythology started. तेणु पोएट्री आरंभ होइतिला ए आर्काइक पीरियड रे. Famous poet Homer, Hesiod composed foundational works such as Iliad, Odyssey and Theogony during this time. तेणु ए पीरियड रे हम कहां को पाइले हमरो इलियड हो बा ओडिसी हो ए दिटा होची हमरो क्लासिकल एपिक जहाँ भी कहते ये दुटा को छाड़ी देले हमरो लिटरेचर सत्ता ही नहीं. निहाती मन रखिबो इलियड आ ओडिसी एपिक स्टोरी. Basically, those were composed to honor their different gods like Dionysius. बुझिला सेतोल टाइम में ड्रामा लिखा होतला ना तांकर पोएटिक फॉर्म रे लिखा होतला. तांकर सेतोबेला सब देवता थिले, फर्टाइल गॉड हेले, फर्टिलिटी गॉड हेले, विंड गॉड हेले. तो से माननकु पूजा करबा पई से माननकु ऑनर करबा उद्देश्य रे ए सब लिखा जाउ थिला. Then comes classical Greek period 500 to 323 before Common Era. This is considered the golden age of Greek culture, philosophy, democracy, and art. Athens flourished under leaders like Pericles, great thinkers like Socrates, Plato, Aristotle, and Western philosophy. तेणु एटा थिला सबुठु गोल्डन एज क्लासिकल एज टा जोटा कोंदी 500 रु 323 बिफोर कॉमन एरा पीरियड को कि सब प्ले राइट्स थिले हमरो प्ले फास्ट ड्रामा स्टार्ट हेतिला. ड्रामा कहा जो स्टार्ट हेतिला हमर सेतबे टाइम रे सब प्ले राइट बा इंपोर्टेंट ड्रामाटिस्ट के थिले एसिक्लस, सोफोक्लिस, यूरोपाइड्स एमन सब इंपोर्टेंट थिले. एसिक्लस होंतु, सोफोक्लिस होंतु, यूरोपाइड्स होंतु, अरिस्टोफेन्स होंतु एमन सब कोठी कर थिले. एमन सब थिले ग्रीक एमन सब थिले ग्रीक रो इंपोर्टेंट प्ले राइट थिले. बेसिकली अरिस्टोफेन्स थिले कॉमेडी रो बाकी एमन जो सब हेले एमन सब ट्रेजेडी रो. सोफोक्लिस हमरो यूरोपाइड्स आइसिक्लस एमन सब थिले कोन ट्रेजेडी रो. मुख्य सेतबे ट्रेजेडी ऊपर बेसी गुरुत्व दिया जाउतला. देखो ट्रेजेडी माने हमर सेतबे डायनोसर सिटी रे चारटा प्ले करा जिवो, तीनटा हबो ट्रेजेडी, गोटे हबो कॉमेडी. तो आइसिक्लस रो इंपोर्टेंट कोन रखिबो
बहुत सारा अच्छी आमर पर्शियन 7 एग्जिस्ट थीव्स सप्लीमेंट्स प्रोथियस बाउंड ह्यूमेनाइड्स लिबेशन बियरर्स आगामेनन ये सब थिला सोफोक्लेस एसिक्लेस इंपोर्टेंट सोफोक्लेस तुम तो पढ़ी ओडिपस रेक्स एंटिगन दी फाइलोटिस एगुड़ा सब हूँ कहार इंपोर्टेंट सोफोक्लिस यूरोपाइड्स सेमती ट्रोजान ओमेन इलेक्ट्रा मिजिया हिपोलिटस हेलेन ये सब हूँ यूरोपाइड्स मुख्य मुख्य ड्रामा एंड आरिस्टोफेन्स दि आर्केनियंस दि क्लाउड्स वास्प पीस फ्रॉग ये सब है कहार आरिस्टोफेन्स इंपोर्टेंट प्ले तापर आसला आमर हेलेनिस्टिक पीरियड केतबेले आरंभ होला एट दी इट बिगन विथ द डेथ ऑफ अलेक्जेंडर ग्रेट अलेक्जेंडर को डेथ पर जो पीरियड स्टार्ट होला एटा हेलेनिस्टिक पीरियड कहला काहेकि अलेक्जेंडर जो सब राज्य कंकर करथिले वेस्ट रु हमर ईस्ट आड़ को माडी आसिले ताको तो पूरा कहजोतला ही वाज द ग्रेट रूलर ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज ही कंकर्ड टेरिटोरीज इंक्लूडिंग इजिप्ट पर्सिया and also some parts of India. The blending of Greek and Eastern culture को कहजाउथिला Hellenistic world. तो ये Hellenistic world रे बेसिकली हमर साइंस मैथमेटिक्स एडवांस करथिला यूक्लिड और आर्किमिडीज को हमें पाइथिले ए पीरियड यूक्लिड हु वाज नोन एज फादर ऑफ ज्योमेट्री एंड आर्किमिडीज एज यू नो ही इज द फादर ऑफ मैथमेटिक्स. देन हमर आसिला रोमन रिपब्लिक. देखो रोमन रिपब्लिक केबे आसिला रोमन रिपब्लिकटा ग्रीक रो 200-300 वर्ष पर रोमन रिपब्लिक देखागला जिते ग्रीक माने इटाली को कंकर कले. तो हाँ आमर रोमन रिपब्लिक स्टार्ट है 509 to 27 BC when Rome transitioned from monarchy to republic. It developed a complex system of governance with the senate, consuls and popular assemblies. तेणु जिते मोनार्की सिस्टम रू आसेम्बली को पड़ा से कौ टाइम आसला रोमन रिपब्लिक को. देख सिनेट कौन सिनेट मीन्स गोटे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन गोटे काउंसिल सिटीर सब बड़ बड़ लीडर मान को लेकिन गोटे काउंसिल गठन करा दैट इज नोन एज सिनेट. कनसल्स कौन कनसल्स मीन्स जो मानक दी जन मैजिस्ट्रेट करा जो मानक लोक मैंने इलेक्ट करुले से कनसल एंड पॉपुलर असेंबली. So Roman literature began to emerge and Roman expansion throughout the Mediterranean increased. तापर Roman Empire देखिबा. Under Augustus, Rome became an empire. Augustus थिले हमर first Roman Empire. So the Rome became empire. The Roman Empire brought century of relative peace and stability that is known as Pax Romana. पैक्स रोमाना कौन जिते अगस्टस आसिले किछि 100 वर्ष पर्यंत पूरा स्थिर हो गला शासनटा मैंने बेसी किछि आमर इन्वेशन देखा मिल ना बेसी किछि बड़ धरणर वार देखा ना लोक मैंने शांति बसति स्थापन करते. सो दैट पीरियड वाज नोन एज रोमान पीस जार कि आमर लैटिन नेम होची पैक्स रोमाना. से को राइटर आमर देखा जाइए. सो यू कैन फाइंड वर्जिल होरास ओविड एंड सेनेका produced influential works. Roman architecture and engineering reached new heights with the construction of roads, aqueducts, monumental buildings like Colosseum. तापर सब लेट एंटिक्विटी कौन शेष बेलू 284 600 कमन एरा माने बर्तमान हमर ख्राइस्ट जन्म होबार 600 वर्ष पड़ा पूर्व को हो कि नहीं. So this period marks the transformation from classical world to medieval world. The Roman Empire began to decline. The Christian became dominant. देखो आम जो देखा कौन एक एंटिक्विटी फॉल देखा मिलला. तो फॉल तो गोटे रिजन नहीं बहुत सारा रिजन अच्छी. सो इट डजंट रिलाई ऑन ए सिंगल थिंग. वी कैन से द रीजन दैट बैड लीडरशिप या फिर इकोनॉमिक स्ट्रगल वीक आर्मी एंड फॉरेन इन्वेशन लाइक जिते सब जर्मन मैंने आसिकी इनवेट कले से भल लीडर मिलने अगस्टस पर तेणु देखा से धीरे धीरे क्लासिकल एंटिक्विटी फॉल है. आउ गोटे मेजर रिजन हूँ क्रिश्चियन जिते आसीगला क्रिश्चियन जिते सब आसला क्रिश्चियन सब कन्वर्जन है क्रिश्चियन जिते इमर्स कला
ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ରୋମାନ ଟ୍ରାଡ଼ିସନ୍ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଡ୍ରାମା ହେଉଥିଲା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ କଲଚରାଲ ସବୁ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେଉଥିଲା, ସେ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଲା। ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା, ତାଙ୍କର ନ୍ୟୁ କଲଚର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ନ୍ୟୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ତାଙ୍କର ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଯେଉଁ ସବୁ ଡ୍ରାମା, ପ୍ଲେ ରାଇଟ୍ସ, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ସେମାନେ ତ ୱାନ୍ ଗଡ୍ ଉପରେ ବିଲିଭ୍ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଜିସସ୍ଙ୍କ ଉପରେ ବିଲିଭ୍ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ରିଜିନ୍, ବିକଜ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟାଇମ୍ ଚର୍ଚ୍ଚ ବିକେମ୍ ଦି ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ବୋଥ୍ ପଲିଟି ଆଣ୍ଡ ସୋସାଇଟି। ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଦଳେଇକି ରଖିଦେଲା। ଗୋଟେ ଯୁଗର ଜଣେ ଅବସାନ ଘଟିଲା କହିଲେ ଭୁଲ ହେବନି, ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଯୁଗ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। So 1 second please। हाँ, बहुत हैंग हो मोबाइलटा। रोमन एम्पायर सरी आमर लेट एंटिक्विटी सरला केते हैंग हो। ओके, देन की कंट्रीब्यूशंस ऑफ एंशिएंट ग्रीस philosophy। Great philosopher developed systems that based on reason, logic and observation. Socrates introduced ethical inquiry through dialogues। Socrates जे थिले स्टूडेंट प्लाटो, who emphasized ideal forms and importance of justice। Aristotle, Plato's student, focused on categorizing knowledge and laid foundation of scientific inquiry। आम जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म पढ़ानी एम पढ़ा, सक्रेटिस हूँ, प्लाटो हूँ, अरिस्टोटल हूँ, ये समस्त को आम पढ़ा। देखा पॉलिटिक्स कौन चेंजेस देखा मिलता। ମୁଁ ଭଲରେ ଏତେ ପଢ଼େଇ ପାରୁନି ଯେହେତୁ ମୋବାଇଲଟା ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଉଛି। ଟିକେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ପାଇଁ ସରି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବ ଫୋନଟାକୁ ରିଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି କିଛି ସବୁ ଫାଇଲ୍ସକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିକି କରିବି। ଓକେ, ପଲିଟିକ୍ସ କ'ଣ? ଆଥେନ୍ସ ହେଉଛି ଆମର ଗ୍ରୀସର କ୍ୟାପିଟାଲ। ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ ଦି କନସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରାସି where the citizens actively participated in governance। The idea of civic responsibility and public debate organized here। लिटरेचर ଉପରେ କ'ଣ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିଥିଲା? ହୋମର୍ସ ଏପିକ୍ସ, ଇଲିଆଡ ହଉ ବା ଓଡିସି ହଉ, it is the cornerstone of Western literature। Greek drama introduced tragedy and comedy as literary genres। The themes of fate, hubris, moral conflict were deeply explored। Science and mathematics रे काहाको देखिबा मिलथिला? thinkers like Pythagoras, Hippocrates and Archimedes made significant progress in geometry, medicine and physics। Their ideas influenced both Islamic and European scholars during the Middle Age and Renaissance। Art and architecture, Greek sculpture focused on idealized human beauty and proportion। Temples like Parthenon reflected harmony and symmetry। थ्री आर्किटेक्चरल ऑर्डर देखा मिलता, गोटे हूँ डोरिक, गोटे हूँ आइकोनिक, गोटे हूँ कोरिंथियन। तो ये सब कौन? डोरिक माने सब सिंपल और ओल्डेस्ट स्टाइल, बेसी बेस नथिला ना कि कलम थिला। तापर आउ टिके इंप्रूव होला आयोनिक। आयोनिक हूँ मोर एलिगेंट दैन डोरिक, कलम तैयारी होला, स्पाइराल स्क्रोल सब डेकोरेशन देखा मिलला। कोरिंथियन हूँ सब बेस्ट टाइप, सबुठ मस्ट डेकोरेटेड, मस्ट ऑर्निक स्टाइल। जो आप बर्तमान यूज कर फोटो न्यू आड करें ड्रेस तुमको देखी दिखती, तुम नेट्रे मारिकी तो देखिपर। ठीक अच्छे। सो की कन्वेंशन ऑफ एंशिएंट रोम, ग्रीक पर आसला रोम। सो लॉ एंड गवर्नेंस, द रोमन्स क्रिएटेड, ओ भगवान मोबाइल को बाड़ दी। द रोमन्स क्रिएटेड sophisticated legal system based on reason and justice। Roman law influenced the development of civil law in many countries। They also experimented with republicanism and centralized imperial rule। तुम्हें सब नहीं जीव कौन? स्क्रीनशॉट। इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर, the Romans were master builders। They invented concrete, built aqueducts to supply cities with water, constructed roads to connect the empire and designed large amphitheaters and public baths। Language and literature, Latin, the language of Rome। Latino language thila Rome, it became the foundation of Roman language, Italian, French, Spanish, etc। Roman writers like Cicero, known for oratory, and historians like Livy and Tacitus documented the empire's history। Poets like Virgil Aeneid and Ovid Metamorphoses served myth and culture। Religion and culture, early Roman religion was polytheistic and borrowed heavily from ग्रीक पेंथियन। सब बड़े मन रख रोमान माने फॉलो करते ग्रीक को। जियोस बिकेम द जुपिटर। बाय द 4th century जो क्रिश्चियन आसीगला सब गॉड मान भूलीगले। से कौन थी कौन कहली मैंने पॉलीथेइस्टिक थे, विभिन्न भगवान उपर विंड भगवान अलग, सी भगवान अलग, फर्टिलिटी भगवान अलग। किंतु क्रिश्चियन इमर्ज होला संपूर्ण नष्ट होगा ट्रेडिशन।
eventually becoming the state religion. Christian ହେଇଗଲା ତାଙ୍କର state ର religion. Legacy of classical antiquity. Philosophical influence କ'ଣ ରହିଲା? Classical philosophy shaped Christian theology, medieval scholasticism, enlightenment thought and modern philosophy. Political thought, ideas like citizenship, republicanism, rule of law, civic virtue rooted the classical political theory. Education and curriculum, the trivium, grammar, rhetoric, logic, and the quadrivium, arithmetic, geometry, music and astronomy. Quadrivium means the four. In medieval education, we are derived from classical education system. Art and literature, the Renaissance artists and writers sought to revive in classical idea. So Renaissance means Renaissance period କ'ଣ ହେଲା ସେ ଯେଉଁ ରାଇଟର ମାନେ କ୍ଲାସିକାଲ ରାଇଟର ମାନଙ୍କୁ ରିଭାଇଭ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବା ନ୍ୟୁ କ୍ଲାସିକାଲ ଯେଉଁଟା ବୁଝିଲେ ନ୍ୟୁ ମିନ୍ସ କପି କରୁଥିଲେ ସେମାନେ କ୍ଲାସିକାଲ ରାଇଟର ମାନଙ୍କୁ ଦେ ଷ୍ଟିଲ୍ ଫଲୋଜ୍ କ୍ଲାସିକାଲ ଷ୍ଟାଇଲ ଲିଟରାରୀ ଫର୍ମସ୍ ଲାଇକ୍ ଏପିକ୍ସ ଓଡ୍ ସାଟାୟାର ଆର୍ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ କ୍ଲାସିକାଲ ମଡେଲ. Many scientific and legal terms originate from Greek and Latin. Knowledge of these languages remain essential for scholars of classical world. End of classical antiquity. जोटा कहते हैं गोटे निर्दिष्ट रीजन नथिला जोटा कि एंड हिला बहुत सारा रीजन थिला हां कि नहीं. सो द symbolic end of classical antiquity is the fall of Western Roman Empire प्राय 476 कॉमन एरा रे संपूर्ण रूप से फॉल देखा को मिलला हमरो ए क्लासिकल पीरियड रहा. हाउएवर द ईस्टर्न रोमन एम्पायर जो कहला बाइजेंटाइन एम्पायर continued to flourish for nearly another 1000 years. So much classical knowledge was preserved by Christian monks and Islamic scholars during the Middle Age. This classical legacy was rediscovered during Renaissance. So reigniting the interest in ancient text and philosophy. So this is all about our classical antiquity. If you have enjoyed, then please do share this video with your friends. Actually, I will be happy if any one student will get benefited from this video. Okay, so I would also like to request you to give your opinions in the comment section. I have repeated this thing so many times, so have a good time.